गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। आवाज तो तब आएगी ना जब हम दिखेंगे। समझ में आया? हम दिखेंगे तो आवाज आ जाएगी। ओके, शुरू करें खेला। सो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने यहाँ तक किया था। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नमस्ते, नमस्कार बच्चा, हाउ आर यू? मजा आ रहा है? 1 मिनट रुकिए ना, एक ही मिनट। सो बच्चा, ट्राई करिए इससे। 30 सेकेंड्स सेचुरेटेड वेपर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, द रिजल्ट विल बी। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक सेचुरेटेड वेपर को कंप्रेस किया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, रिमेन्स एट सेचुरेशन प्रेशर, बट कंडेंसेशन होगा उसका। सो इनिशियली द सब्सटेंस इज सेचुरेटेड वेपर। नाउ व्हेन यू आर हैविंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, ओके, यहाँ पे कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? 'सो बच्चा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द स्टेट विल एंटर द टू फेस रीजन। टू फेस रीजन, एंड यहाँ पे some vapor will condense into the liquid, so pressure remains constant। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आइडियल गैस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। आप लोगों को याद रखना है, सम वेपर विल कंडेंस एंड प्रेशर विल नॉट चेंज। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वेट वेपर जोन में, तो आप लोगों का प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, याद रहेगा। ओके, चलो। नेक्स्ट इज सर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द वन। इसका तो डायरेक्ट आंसर दे दें सर। द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू द एक्सटेंट और साइज और मास ऑफ द सिस्टम, मास, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, magnetization force, electrical charge, so it depends on to the mass और size of the system। होगा कि नहीं होगा? It depends on to the mass और size और extent of the system। हाँ या ना? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सर, a container is filled with a sample of an ideal gas at a pressure of 1.5 atm, the gas is compressed isothermally to 1/4 of its original volume। Now what is the new pressure of the gas? ट्राई करिए बच्चा, ट्राई करिए बच्चा।
सो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इसको ट्राई करें अपन लोग। सर P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम बिकम्स V2 is 1/4 of the initial volume। एक मिनट है बच्चे, एक मिनट है। P2 इज इक्वल्स टू P1 इंटू V1 अपॉन V2, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं ना बच्चे, ओके थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, हम रियली सॉरी, वो क्या इसरो को नोटिस का डाला ना, तो सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं। सो दिस विल बी 6 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हो जाएगा 6 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सर अ कंटेनर with rigid wall is filled with a sample of an ideal gas, the absolute temperature of the gas is doubled, what happens to the pressure of the gas, what happens to the pressure of the gas? So for the fixed mass of an ideal gas rigid container, अगर अपन लोग ये समझ सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P upon T will also be constant, volume constant, then P upon T will also be constant, ओके हाँ या ना। नाउ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। यार वो तो अब देखना पड़ेगा, देखो आप लोग अगर गेट दिया था तो अप्लाई कर देना। सर T2 अपन T1 इज इक्वल टू 2, सो सीधी बात है प्रेशर भी डबल होगा। सो इट डबल्स बच्चा, याद रहेगा, इट डबल्स, बस याद रहेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो मैं ज्यादा टाइम रुकूंगा नहीं, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं हो, अपन लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके, टारगेट है 150 तक पहुंच जाते हैं सोने से पहले, मन को शांति होगी, अच्छी नींद आएगी। और क्वेश्चन देखो सारे पीवाई क्यूज हैं, ओके। P gauge is equals to PABS minus PATM local. So PABS is equals to P gauge plus PATM local, और वैक्यूम होता तो अलग हो जाता, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी गुड इवनिंग अवनीश, कहाँ हो आजकल भाई। सर इफ अ प्योर सब्सटेंस contained in the rigid vessel passes through the critical state during the heating, its initial state should be, उसका इनिशियल स्टेट क्या होना चाहिए। सो टू पास एग्जैक्टली थ्रू द क्रिटिकल पॉइंट वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू द क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर होने चाहिए। बहुत सारे स्टेट है जेई के नीतीश, बहुत सारे स्टेट है जेई के पीएसयूज के, मैंने चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, बट ये जेई के नहीं है, सारे एई के क्वेश्चन है और पीएसयूज के। सो एट अ टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, वो आप लोगों के सेचुरेशन कर्व के अंदर चला जाएगा, सेचुरेशन डोम के। सो इनिशियल स्टेट शुड बी सेचुरेटेड लिक्विड वाटर मिक्सचर, और उसको फिर हीट किया जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग उस पर वर्टिकल लाइन जैसा बन जाएगा। So neither saturated liquid nor saturated vapor generally has a critical specific volume at lower temperature, so it should be a mixture। याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी होगा ये, सॉरी ये याद रहेगा आप लोगों को, ये थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या बात है।
बहुत लोग इसमें सबकूल्ड टिक कर देंगे, बट सबकूल्ड गलत है इसमें, ठीक है, सबकूल्ड इसमें गलत है, याद रहेगा, ठीक है। चलो सर, अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन द सर्टेन ऑर्डर and restore the initial condition is known as a cycle, but a thermodynamic cycle is a sequence of process after which the system returns to the initial state, and for the cycle the cyclic integral of the property is zero. साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज जीरो, हाँ या ना बच्चे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज जीरो, जैसे मैंने बोला पी फॉर प्रॉपर्टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी जीरो, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे आ गए तो प्रॉपर्टी का चेंज जीरो हो गया, सो इट इज नाइदर रिवर्सिबल नॉर इरिवर्सिबल बट अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। सर, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम इक्वल्स टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट, याद रखना, अब इसका भी डेरिवेशन है बहुत प्यारा सा, द कंप्लीट हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू द चेंज इन एंथैल्पी। ओके, अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता तो क्या होता, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता तो आप लोगों का कंप्लीट हीट सप्लाइड विल बी यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे वर्क डन आप लोगों का जीरो हो जाएगा। ओके, सही है, सही है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा, सो इट विल बी प्रेशर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इनसाइड द रूम वाज लेफ्ट ओपन, क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक एग्जाम्स में आया है। सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो सीधी सी बात है, रेफ्रिजरेटर रिमूव्स द हीट फ्रॉम द कोल्ड स्पेस बट रिजेक्ट्स द हीट टू द सराउंडिंग। सो यहाँ पे अगर अपन लोग उसका फंडामेंटल डायग्राम याद करें, सर द हीट सप्लाइड टू द लो टेम्परेचर, नहीं हाई टेम्परेचर सिंक, will be equals to the heat which is extracted from the lower temperature source plus the work input, हाँ या ना, the heat which is extracted from the lower temperature source plus the work input, होगा कि नहीं होगा। when the refrigerator door is open तो evaporator QL को एब्जॉर्ब करता रहता है और कंडेंसर रिजेक्ट करता है QL प्लस W, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे Q नेट किसके बराबर हो जाएगा, सो यहाँ पे Q नेट आप लोगों के वर्क इनपुट से बढ़ जाएगा, रूम गर्म होता रहेगा, ओपन रेफ्रिजरेटर कैन नेवर कूल अ क्लोज्ड रूम बिकॉज उसको कंप्रेसर वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कंप्रेसर वर्क बिकम्स हीट, compressor work gradually becomes equals to heat, हाँ या ना बच्चे। सो कैन वी से दैट इट द रूम विल gradually warm up, okay, the room will gradually warm up, okay, is this clear? Next question. सर, फॉर विच ऑफ द केस द कुकिंग टाइम विल बी द शॉर्टेस्ट, बच्चा कुकिंग टाइम शॉर्टेस्ट होगा जब आप लोगों का प्रेशर सबसे ज्यादा है, प्रेशर सबसे ज्यादा है, सो अनकवर्ड में तो कभी नहीं, कवर्ड विथ अ लाइट रीड, नो सर, कवर्ड विथ अ हैवी लिड, सो हैवी लिड विल इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड अ कुकिंग वेसल। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि आप लोगों का प्रेशर वेसल या सेफ्टी वाल का भी वेट होता है, सो हायर द प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड एट हायर बॉइलिंग पॉइंट द फूड इज एक्सपोज टू हॉटर वाटर एंड स्टीम, तो वहां पे आप लोगों का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है, कुकिंग टाइम कम हो जाता है, एंड कुकिंग टाइम कम होता है और कुकिंग आप लोगों का जल्दी हो जाएगा। सो कवर्ड विथ अ हैवी लीड, कवर्ड विथ अ हैवी लीड, बरोबर है। चलो सर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इनिशियली कंटेन्स द एयर एट 250 किलो पास्कल and 600 Kelvin. The system is allowed to cool to half of its volume at constant pressure. Okay, the work done. Yes, बच्चा, इट्स नॉट टेक्निकली आइसोकोरिक, हाँ ऋषभ, आप उसको टेक्निकली आइसोकोरिक नहीं बोलते, आप हीट सप्लाई करते हो तो प्रेशर बढ़ता है अप टू द पॉसिबिलिटी, समझ में आया। सो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आप लोगों का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, भाई स्ट्रेंथ कम है आज, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चा, हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उतना आपको कौन कराएगा, वो भी फ्री में। पी वी टू माइनस वी वन ऑल्सो इक्वल्स टू पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, आर इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन। अब टी वन आप लोगों का कितना दिया हुआ है, 600,
थैंक यू वेरी मच बच्चा। V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। सो यहाँ पे आप लोगों का वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, सो V2 अपॉन V1 विल बी हाफ। सो हाफ T1 मतलब हाफ ऑफ 300, मतलब हाफ ऑफ 600 मतलब 300 केल्विन बच्चा। ठीक है, सो ये हो जाएगा R की वैल्यू 0.287। 300। सही है। सो नेगेटिव वर्क मींस वर्क इज डन ऑन द गैस वाइल कंप्रेशन, हाँ या ना? ओके, आगे बढ़े, देख लो इजी क्वेश्चन है यार। मुझे ऐसा लगता है बच्चा आप लोगों के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो आप लोगों के पीवीटी रिलेशन के ऊपर आता ही है, थर्मोडायनेमिक्स में से आता है कि नहीं आता है? अरे प्लस मैंने टिक कर दिया, सॉरी, माइनस वाला टिक करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, देखो मेरे से भी गलती हो गई, मेरे से भी गलती हो गई, देखो जल्दी जल्दी में, दुर्घटना से देर भली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, during a certain reversible process the change in internal energy of the closed system is stated to be equal to the net heat transferred. Such a condition exists when the process is executed dash, when the process is executed dash। so यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? Q is equals to the change in internal energy is only and only possible when your work done is zero। एंड वर्क डन किस में जीरो होता है सर? आइसोकोरिक प्रोसेस में। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी। अब यार आई डोंट थिंक इस स्टेज पे मैं आप लोगों को इसको जीरो से समझाऊंगा, चलो। सर इन द जनरल कंप्रेशन प्रोसेस 2 किलोजूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज सप्लाइड टू 5 kg of working substance and 800 kilojoule of heat is rejected to the cooling jacket। the change in specific energy is given by। ओके कैसे हो जाएगा? सर यहाँ पे अगर अपन लोग देखें, sir change in internal energy is equals to Q minus W, so mechanical work is done on the system, so -2। heat rejected है तो माइनस होगा। सो सो 1.2 किलो जूल, बट यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पूछा है क्योंकि 5 kg मास है। सो छोटा u 0.24। ओके
आगे बढ़े बच्चा, ऑल गुड। चलो सर, a domestic refrigerator is loaded with the fresh food and the door is closed. Okay, during a certain period the machine consumes 1.25 kilowatt hour of electrical energy in the cooling the food, and the internal energy of the system decreases by 4500 kilojoule. The magnitude of net heat transfer for the system will be, फर्स्ट लॉ से हो जाएगा। वर्क इनपुट 1.25 किलोवाट आवर माइनस द इंटरनल एनर्जी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय, सही है, अब सही है, -4500 वर्क इनपुट। हाँ, वर्क इनपुट को भी माइनस लिखता हूँ ना, इट्स इनपुट वर्क। हाँ रे, तो मैंने वर्क इनपुट तो लिखा है, अभी साइन कन्वेंशन करा कहाँ है रे, रुको रे, रुको रुको तो सही, कहाँ टेंशन पे चढ़ जाते हो आप लोग। माइनस प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके हीट क्या हो जाएगा, आप लोगों को मैग्नीट्यूड पूछा है तो पेपर में साइन यूज नहीं करेंगे, समझ में आया। इज दिस क्लियर बच्चा? क्लियर हुआ? का फाइंड करना है, का नहीं करना है, बोलो। आगे बढ़े। एक मिनट बच्चे, आगे बढ़े, चलो ट्राई करो इसको। सर, एयर एट 300 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is throttled by a valve
1 atmospheric. If the wall is adiabatic and the change in kinetic energy is negligible, the exit temperature of air will be. कैसे करेंगे? तो बच्चा आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। ये ट्रैप है, कौन फिरकी ले रहा है अपनी। ये क्वेश्चन में पेन उठाना पाप है, ये क्वेश्चन में पेन उठाना पाप है। एसएफडब्ल्यू लगा के क्या करेंगे रे, कौन फिरकी ले रहा है। अरे यार, इसमें एबीसी ऑप्शन यही आ गया है, देखो ए बी सी और डी, ठीक है। सर एयर कंडीशनिंग सिस्टम operating onto a reversed Carnot cycle is required to remove the heat from the house at a rate of 32 kg per second, maintain its temperature constant at 300 Kelvin. If the temperature of the outdoor is 320 Kelvin, then the power required to operate this air conditioning system will be. Sir, COP of refrigerator will be TL upon TH minus TL. हाँ या ना? सर TL 300, 15। अब आप लोगों का हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लो टेम्परेचर सोर्स कैसे पता चला सर? एक तो कार्नोट है तो ये फॉर्मूला लग गया। सर आंसर 2.13 आ रहा है तो 2.1 सही रहेगा। देखते हैं, अरे मैं तो आप लोगों के सामने लाइव ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों का क्यूएल हो गया, क्यूएल हो गया। 32 किलो जूल पर सेकेंड।
चलो ट्राई करो सर. टू Carnot heat engine operating in series such that the heat sink of first heat engine serves at as the heat source for the second one if the source temperature of the first heat engine is 1200 and sink for second temperature is T2. Thermal efficiency of both the engines are same. ठीक है चलो सर a unit mass of an ideal gas at temperature T undergoes a reversible isothermal process P1. यार ये क्या हो गया रे ऑप्शंस में. हाँ ठीक है अब ऑप्शंस देख लो. तो बच्चा फॉर्मूला क्या हो जाएगा. V2 upon V1. V2 upon V1 is equals to P1 upon P2. होगा कि नहीं होगा. तो बच्चा यहाँ पे कैन वी रिप्लेस दिस. फॉर आइसोथर्मल. यस बच्चा. दैट्स वाई वहां पे टेम्परेचर वाला कट हो गया ना ऋषभ जी. मैंने आपको अगर आपने उसके 3 फॉर्मूला लिखे तो उसमें टेम्परेचर वाला ऑटो कट हो गया. सो बच्चा हॉट वाटर पाइप at 80 degree centigrade
Sir, a hot water pipe at 80 degrees centigrade is losing the heat to the surrounding air at 5 degrees centigrade at a rate of 2200 watt. The rate of entropy generation in the universe is. तो बच्चा एंट्रोपी जनरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बच्चा क्यू तो कॉमन ले लें, 2200 वाट। टी लो। अब चैलेंज ये है, इसको केल्सी के बिना सॉल्व कैसे करें? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ें। चलो। Sir, a house is maintained at 27 degrees centigrade in winter by electrical resistance heater. If the outer temperature is 7 degrees centigrade, then the second law of efficiency of the resistance heater is. मैं केसीओ लेकर बैठा हूँ सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो इसमें अलाउड है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? हाउस इज मेंटेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर by electrical resistance heater. If the outdoor temperature is 7 degrees centigrade, then the second law of efficiency of resistance heater is. second law of efficiency का फॉर्मूला क्या है? COP actual अपॉन COP रिवर्सिबल। अब बच्चा यहाँ पे आप लोगों का COP एक्चुअल क्या होगा? COP एक्चुअल क्या हो जाएगा? COP actual for the electrical resistance heater will be 1. TL अपॉन TH माइनस TL, तो TL कितना हो जाएगा? 300 केल्विन में, और 327 माइनस 7 मतलब 20। तो बच्चा
इलेक्ट्रिकल हीटर की फर्स्ट लॉ के हिसाब से एफिशिएंसी 100% के आसपास हो सकती है, बट सेकंड लॉ के हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, चलो आप लोग सॉल्व करिए। अब हम जल ग्राइंड करके आते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे, है ना, 1 मिनट में हम जल ग्राइंड करके आते हैं।
वॉइस नहीं आ रहा था ना, वो भूल से मेरे से म्यूट से अनम्यूट करना रह गया था। ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया। अब आप लोगों का एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, हाँ 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 हाँ। देख लो बच्चा, समझ में आ रहा है? देखो, आप लोगों ने सबसे पहले एक्सर्जी का फॉर्मूला यूज किया, सर दैट द एक्सर्जी जनरेटेड विल बी इक्वल्स टू क्यू डॉट इंटू वन माइनस टी नॉट अपॉन टी, एंड आप लोगों का एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन विल बी इक्वल्स टू वर्क इनपुट माइनस द एक्सर्जी जनरेशन। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? आगे बढ़े। Sir, keeping the limitations imposed by the second law of thermodynamics in mind, choose the wrong statement. So, bacha, according to the second law, efficiency actual upon efficiency reversible. ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है आप लोगों को ये देखना और जरूरी, एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन विल बी लेस देन 1। सो सेकंड लॉ, एफिशिएंसी मे बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? हाँ या ना?
ये तो पॉसिबल है। सो बच्चा हीट इंजन कैन नॉट हैव अ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये तो कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी इज 100%, ये भी पॉसिबल है। फॉर द सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स थर्मल एफिशिएंसी, ये इनकरेक्ट है। सेकंड लॉ एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कैन बी ग्रेटर देन इट्स थर्मल एफिशिएंसी, हाँ या ना? सो ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। आजकल सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी से आप लोगों के क्वेश्चंस बढ़ गए। सर द सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस इज 100% इफ नो एंट्रोपी इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, सो थर्मल एफिशिएंसी एंड सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी के रेफरेंस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, और अपन लोगों को उनको आइडेंटिकल मान के नहीं चलना है। ठीक है बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर a heat engine receives the heat from the source at 1000 degree centigrade. ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? So बच्चा heat engine receives the heat from the source at 1000 degree centigrade and rejects the waste heat to the sink at 50 degree centigrade. If the heat is supplied to the engine at a rate of 100 kilojoule per second, then the maximum power that can be produced from the heat engine will be. तो बच्चा एफिशिएंसी मैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1273, ये कितना हो जाएगा? Now बच्चा heat input is 100 kilojoule per second, मतलब 100 kilowatt, so max work will be.
74.6 किलोवाट। ओके, ठीक है बच्चा, सही है। आगे बढ़े, चलो ट्राई करो इसको। सर, फॉर द क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ या ना, इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस और नो बच्चे, इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो ध्यान से, देख रहे हो आप लोग ध्यान से? चलो सर, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्नड बाय। तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का याद है ना ये? So Boyle's law, when temperature is equals to constant, P into V is constant. When pressure is constant, Boyle's law. Sir, what is the characteristic of a quasi-static process?
So बच्चा, what is a quasi-static process? Infinitely slow process in which the intensive properties are uniform throughout. Sir, torr is the unit of 1 torr is equals to 1 mm of Hg or 133.322 Pascal. Okay, so torr is not the unit of temperature or energy, but it is the unit of pressure. Chalo. Sir, the integrating factor of quasi-static process displacement work is? So dW upon P. So बच्चा, dV is an exact differential and integrating factor क्या हो जाएगा? वन अपॉन पी आता है बच्चे. और आप लोगों को ये याद रखना है, फॉर यू कैन से रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आप लोगों का? वन अपॉन टी हो जाएगा.
Sir, for a closed, which of the following statement does not change during the throttling? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए. Throttling is known as an isenthalpic process. Sir, heat transfer to the system at constant pressure is equals to. Sir, for heating of dry steam above the saturation temperature. Sir, superheating of the steam is done at constant pressure. ग्राफ याद करो. So, bacha, this is a constant pressure process. Sir, on the Mollier chart, the constant pressure line, Mollier chart HS diagram है.
Sir, it diverges from left to right. ओके अपनी नोट्स में इसके बारे में क्लियरली अपन लोगों ने डिटेल में लिखा हुआ है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एचएस डायग्राम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नंबर ए होगा. ठीक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा बच्चे. सर डैश इज नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी. जो कंजर्व नहीं है मतलब उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. मास मोमेंटम एनर्जी आर गवर्न्ड बाय कंजर्वेशन लॉ बट एक्सर्जी नहीं. एक्सर्जी इज डिस्ट्रॉयड बाय इरिवर्सिबिलिटी. याद रखिए. ओके चलो. सर द एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन अ प्रोसेस. So an isolated system exchanges neither mass or energy with the surrounding. So exergy can only remain constant or decrease. याद रहेगा. So बच्चा in a reversible process exergy remains constant and in an irreversible process exergy decreases. So energy of an isolated remains constant. Energy of an isolated system can remain constant but exergy उसकी destroy हो सकती है. It can never increase. Okay. Sir the latent heat of vaporization at the critical point is equal to 0. So during the throttling process, highly irreversible process.
pressure decreases and enthalpy H remains constant. ठीक है, so pressure always decreases in the throttling process. Okay, याद रहेगा. चलो next question. Sir, an ideal gas at 27 degrees centigrade is heated at constant pressure till its volume becomes 3 times the temperature of the gas will be. 627 डिग्री सेंटीग्रेड सही है बच्चा. ये बच्चा क्लास क्यों चल रही है जब आप लोगों को ग्रुप में डाउट पूछने हैं? मैं ब्लॉक कर दूंगा सब लोगों को अगर यही चलता रहा तो. एक एक को मैं ब्लॉक कर दूंगा बच्चे. आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लास में? सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. चलो सर, द स्टेडी फ्लो डिवाइस दैट रिजल्ट्स इन द ड्रॉप इन द वर्किंग फ्लूइड प्रेशर फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट आर. नोजल क्या करता है? सर, प्रेशर डिक्रीजेस, velocity increases. Okay, what about turbine? सो बच्चा यहाँ पे टर्बाइन में प्रेशर डिक्रीजेस एंड वी गेट द वर्क आउटपुट. थ्रॉटलिंग में क्या होता है?
तो बच्चा नोजल में और डिफ्यूजर में क्या होता है, डिफ्यूजर नोजल से उल्टा काम करता है। नोजल, टर्बाइन एंड थ्रॉटलिंग वर्क। So which of the following thermodynamic quantities? अरे योगेश सर आपका भी सेशन चल रहा है, हमको पता नहीं था। आए सर, सॉरी अभी आपकी कमेंट देखे। चलो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग, आ जाइए आप भी सर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज एन आउटकम ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? मुझे पता नहीं था सर, तो क्लैश नहीं करते वरना। ओके, क्या हो जाएगा सर? विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज एन आउटकम ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मिलता है? एंट्रोपी मिलती है। सर अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज, देखो अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड एज द सिस्टम रीचेस टू द इक्विलिब्रियम विथ इट्स मूवमेंट, हाँ या ना? उस फाइनल इक्विलिब्रियम को डेड स्टेट भी कहा जाता है। तो एट डेड स्टेट अपन लोग ये बोल सकते हैं द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ओके, हाँ या ना? सो अवेलेबिलिटी is the maximum possible useful work obtained from the system when the system goes to the dead state. चलो sir, the for the closed system, the difference between the heat added to the system and the work done by the system is equals to the change in internal energy. लॉज वापस यूज हो रहा है सर। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय, सर डेड स्टेट मींस इट इज रीच विद द इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। डेड स्टेट मींस बच्चा इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। ओके, याद रहेगा। So an isothermal process is governed by Boyle's law. Next question, sir, which of the following characteristic feature is of a quasi-static process? Sir, infinite slowness and infinitely slow process in which the intensive properties remains uniform throughout, उसको quasi-static process कहा जाता है। सर 1 torr is a unit of pressure, ये रिपीट होने लगे आई थिंक, है ना? सर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द कॉसी स्टेटिक डिस्प्लेसमेंट वर्क, आई थिंक अभी अपन लोगों ने किया था, 1/p आएगा। रिपीटिंग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/p था इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, जो रिपीटिंग क्वेश्चन है उनको जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग? वापस रिपीटिंग है, एंथैल्पी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग। सर हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू,
Sir, what is the percentage of oxygen in atmosphere? So by mass, it is 23%, and by volume, sir, the latent heat of steam at the pressure greater than the, so बच्चा the latent heat of steam at a pressure greater than the atmospheric pressure, यहाँ पे होता क्या है बच्चा, आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है, then it is less than बच्चा, क्योंकि as the pressure increases the latent heat decreases. Sir, the heating of dry stream above the saturation temperature is known as superheating. चलो sir, the superheating is done at, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आई थिंक, ठीक है, कोई बात नहीं, इनको जल्दी जल्दी करते, एग्जाम्स में भी आए होंगे इसलिए. सर, ऑन द मोलियर चार्ट द कांस्टेंट प्रेशर डायग्राम डाइवर्जेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये रिपीटिंग है. सर, ऑन द मोलियर डायग्राम थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, sir, the most efficient method to compress a given gas, compress the air is, देखो, sir, work done in isothermal process is less than the work done in the polytropic process.
सर डैश इज नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, अब ऑब्वियसली ये तो रिपीटिंग एक्सर्जी। सर एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया था, कैन नेवर इंक्रीज। ओके सर वर्क इज मैक्सिमम इन कंप्रेशन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ बट यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड ना। सर a thermodynamic system is considered to be an isolated one. We are focusing on less work for compression. Yes बच्चा, work input should be minimum, then it will be the most efficient ऋषभ। एंड आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर होता तो आप लोगों को चेक करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आइसोथर्मल एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपी की बात चल रही है, एक्सपांशन में कांस्टेंट प्रेशर भी आ जाएगा। Energy and mass transfer is zero, but energy transformation is possible. So bacha, the property of the thermodynamic system, property depends on to the state. So it is a point function or a state function. Sir, which one of the following represents the open thermodynamic system? मैन्युअल आइसक्रीम फ्रीजर की साइकिल जो होती है, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। प्रेशर कुकर अप टू द सेफ्टी वाल्व क्लोज्ड इज अ क्लोज सिस्टम। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज आल्सो अ क्लोज सिस्टम एंड सेंट्रिफ्यूगल पंप इज द ओपन सिस्टम। सर द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? सर आप लोगों का हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू द वर्क डन, होता है कि नहीं होता है? गामा माइनस एन अपॉन
तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर इफ द टाइम टेकन by a system to execute a process through a finite gradient is infinitely large, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल बन जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे फाइनाइट ग्रेडियंट इवन दो द टाइम टेकन इज इन्फिनाइटली लार्ज, सो फाइनाइट टेम्परेचर, प्रेशर और chemical potential gradient produces irreversibility making it infinitely long does not remove the irreversibility caused by heat। so यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्या वो irreversible ही रहेगा कि रिवर्सिबल रहेगा? इरिवर्सिबल ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का फाइनाइट ग्रेडियंट इज इन्फिनाइटली लार्ज। चलो न्यूमेरिकल आ गया, ट्राई करो। सर स्टेशनरी मास ऑफ गैस, यस ग्रेडियंट बढ़ गया तो रिवर्सिबिलिटी आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। तो बच्चा स्टेशनरी मास ऑफ गैस is compressed without friction from an initial state of 0.2 meter cube and 0.1 megapascal to a final state of 0.1 meter cube and zero point 0.1 megapascal, the pressure remaining constant during the process, that there is a transfer of 35 kilojoule of heat from the gas during the process, the internal energy of the gas will be। तो यहाँ पे वर्क डन निकाल ले अपन लोग पहले।
नेक्स्ट इज बच्चा, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। चलो इसको ट्राई करो सर। ड्यूरिंग द स्टेडी फ्लो कंप्रेशन प्रोसेस ऑफ द गैस विद द फ्लो रेट of 2 kg per second, the increase in the specific enthalpy is 15 kilojoule per kg, decrease in kinetic energy is 2 kilojoule per kg, the rate of heat rejection to the environment is 3 kilowatt. ट्राई करिए। सो बच्चा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इन द कुकिंग कंपटीशन यू हैव टू कुक द फूड इन 20 मिनट्स, द बेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द पेन शुड बी कवर्ड विद द हेवी लीड। क्यों? क्योंकि यू नीड फास्टर कुकिंग। ठीक है, सही है सर। टू चेंज द एंट्रोपी एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इट इज अज्यूम्ड।
सो बच्चा यहाँ पे आप लोगों को ये देखना जरूरी है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता, ओनली चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज निग्लेक्टेड। तो यहाँ पे फॉर द इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस जनरली इट इज अज्यूम टू फाइंड एंट्रोपी दैट चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। ओके, याद रहेगा, द चेंज इन वॉल्यूम इज अज्यूम टू बी जीरो। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बच्चे? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, समझ में आया? सर कैन अ सिस्टम हैव हायर सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी देन द फर्स्ट लॉ प्रोसेस? ये अपन लोगों ने देखा था, हाँ। Second law of efficiency can be greater than first law of efficiency and even greater than 100%. Yes. तो बच्चा यहाँ पे ये भी हो जाएगा, if two bodies at temperature T1 and T2 such that T1 is greater than T2, they are in contact with each other and engine is mounted between them for extracting the maximum work। ये आप लोगों का वही कंडीशन आएगा, TF will be equals to root of T1 T2। ये रेस टू में है बच्चा। ये बच्चा वो आप लोगों का इंजन वाला केस नहीं है, ध्यान से देखना, ये इंजन वाला केस नहीं है, ये मैं आपको डिराइव कराऊंगा ऋषभ। ये रिपीट हो रहा है? नहीं सर, रिपीट तो नहीं हो रहा है। इसलिए तो मैंने बोला इंजन वहां पे लिखा हुआ होता तो वो लिखा हुआ होता सोर्स सिंक। ऑप्शन नंबर ए सही है सर, फॉर द कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इज 100, कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। सब लोग सो गए, अपन लास्ट क्वेश्चन है अपना भी। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस